Everyone, welcome back to the Students Academy. So, we were doing the IELTS, right? So here, we are going to do the task 1, Academy. So here, for today our task is of the pie chart, right? तो आप देख सकते हैं इस फिगर में हमें दो पाई चार्ट गिवन है, राइट, ऑफ द ईयर 2011 एंड ऑफ द ईयर 2016। और यहाँ पे हमें बताया गया है, क्वेश्चन में क्या है, हाउ मच मनी यूरोपियन स्पेंड और डिफरेंट थिंग इन द टू डिफरेंट ईयर। ये जो यूरोप के जो लोग हैं वो कैसे जो अपनी मनी है वो स्पेंड करते हैं फूड पे, रेंट पे, गेम्स एंड स्टेशनरी। हमारे पास चार आइटम दिए हैं, कौन कौन सी? फूड, रेंट, stationery, and last one here given is games। ठीक है, और यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली लिखा होगा यूरोपियन, ठीक है। तो हमें लाइकवाइज जो अपना टास्क है वो लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, whenever we have to do the task 1 academic, हमारी पहली चीज क्या है, जो क्वेश्चन गिवन है उसको हमें क्या करना है, पैराफ्रेज। पैराफ्रेज का मैंने मतलब बताया था, जब हम एक लाइन को अपने ओन वर्ड्स में लिखते हैं, दैट व्हाट आई मेंट बाय पैराफ्रेजिंग, राइट। सो हियर द क्वेश्चन गिव अस हाउ मच मनी द यूरोपियन स्पेंड। जब भी आपको सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, एक अच्छी एक अच्छी लाइन होनी चाहिए जिससे मतलब इम्पैक्ट जो है वो काफी अच्छा पड़ता है। सो वी कैन यूज द वर्ड द सप्लाइड और द गिवन पाई चार्ट, राइट। सो आई एम गोइंग टू यूज द वर्ड द सप्लाइड पाई चार्ट। यहाँ पे जो हमें पाई चार्ट गिवन है, द सप्लाइड पाई चार्ट। अब हम बताएंगे ये जो दो पाई चार्ट है, जो एक ईयर 2011 का है और एक ईयर 2016 का है, ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमें रिप्रेजेंट करके बताता है कि जो यूरोपियन लोग हैं वो जो अपनी इनकम है वो कैसे स्पेंड करते हैं इन सब चार अलग अलग चीजों पे, ठीक है। तो हमें ये लाइन लिखना है, द सप्लाई पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स about that how। अब हम यहाँ पे लिखेंगे यूरोपियन, we can write the word citizens of Europe, right? That how citizens of Europe are spending। और एक चीज का हमें ध्यान रखना है, ये हमें गिवन ईयर है, मतलब पुराने ईयर्स के है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, पास्ट फॉर्म। So the supply part chart represent about the how citizens of Europe spend their income, ठीक है। So we will write the word spend, spend their income on। We can write all the four things, क्योंकि यहाँ पे मैं different things लिखा है, ठीक है। तो हम ये चार चीजें भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। Spend their income on food, then stationery and games, on food, then games and stationery items, stationery items। और यहाँ पर लिखा है इन टू डिफरेंट ईयर, हम लिख सकते हैं इन ईयर 2011 एंड ईयर 2016, ठीक है। इन ईयर 2011 एंड 2016, ठीक है। पहला है हमने पैराफ्रेजिंग कर दी। पैराफ्रेज करने के बाद हमारा नेक्स्ट टर्म क्या होता है, इसी लाइन के साथ हम आगे बताएं कि जो हमारा पाई चार्ट है और जो भी हमें एनी काइंड ऑफ द फिगर व्हिच इज गिवन टू अस, क्या वो प्रोपोर्शन में है, क्या वो नंबर्स में है, न्यूमरल्स में है, तो वो किस चीज में है। Here we can see the percentage is there, so I can write the data। We can write the data is given or calibrated, right? The data is calibrated in, you can write the word percentage or the proportion, both are correct, so that is calibrated in percentage, right? ऐसे जो है पहले हमने क्या किया, जो हमारे क्वेश्चन की जो लाइन थी इसको पैराफ्रेज करके हमने बता दिया कि डाटा जो है वो कैलिब्रेट किसमें हुआ है, हमारा परसेंटेज में हुआ, ठीक है। अब डाटा कैलिब्रेशन करने के बाद हमारा सेकंड में क्या होता है, सेकंड पैराग्राफ में, ये हमारा पहला पैराग्राफ है इसका। अब नेक्स्ट हम बताते हैं ओवरऑल। तो इन द ओवरऑल पैराग्राफ हमें लेना पॉजिटिव बताया था, ओवरऑल पैराग्राफ में कोई भी फिगर यूज नहीं की जाए। अगर आप कोई भी फिगर यूज करोगे तो नंबर आपको डिडक्ट होंगे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर व्हिच हैज बीन मेड, ओके। सो इन द ओवरऑल keep that in mind that we have to use no figure or any number, right?
हम इसे ऊपर ऊपर से ओवरऑल बताने के लिए क्या दिख रहा है, वी कैन सी इन द ईयर 2011 फूड पे 60% लोगों ने अपनी इनकम स्पेंड की और वही रेंट पे, फूड और रेंट पे सबसे ज्यादा, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग लाइन इसकी क्या लिख सकते हैं, ओवरऑल स्टेशन के नंबर होंगे, ठीक है। ओवरऑल इट इज एविडेंट, एविडेंट का मतलब कि इस ओवरऑल को देखने से हमें क्या पता चल रहा है, इट इज एविडेंट दैट दिस इज क्लियर है दैट पीपल, ठीक है, दैट पीपल स्पेंड देयर लार्ज अमाउंट ऑफ इनकम, उनमें सबसे ज्यादा जो पैसे हैं किसके खर्च में, लार्ज अमाउंट ऑफ इनकम, और यू कैन राइट हियर द मनी, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ इनकम और मनी ऑन, दोनों चीजों के लिए सबसे ज्यादा पैसे, दैट इज मोर देन ऑन फूड एंड रेंट। पहले हमने बता दिया हाई है, लोग बता रहे पहले हमने बता दिया हाई हमारा कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोपोर्शन किसकी है, फूड एंड रेंट की। और वही हम देख सकते हैं लोएस्ट प्रोपोर्शन किसकी है इन दोनों में, एक तरफ जीन्स में और एक तरफ स्टेशनरी है, बट अगर हम देखें ओवरऑल सबसे ज्यादा लोग स्टेशनरी में है, दैट इज 5%। ईयर 2016, हम यहाँ पे ईयर मेंशन करेंगे नहीं क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही लिखा है, हम कोई भी फिगर का नंबर नहीं देंगे, ठीक है। तो हम बता देंगे दिस प्रोपोर्शन ऑफ मनी वाज स्पेंट ऑन स्टेशनरी, ठीक है। वाई यहाँ पे आगे कनेक्टर डाल के, वाई दिस प्रोपोर्शन वाज स्पेंट ऑन स्टेशनरी आइटम्स, ठीक है। स्टेशनरी आइटम लिख सकते हैं items। तो पहले आपको बता दिया हमारा कि पहले हमारा कैलकुलेट कर दिया डाटा कैलकुलेशन होगी, सेकंड पैराग्राफ में हमने बता दिया ओवरऑल कि ओवरऑल हमें जो ये दो पाई चार्ट गिवन है ये हमें क्या दिख रहा है, ठीक है। अब पाई चार्ट में ओवरऑल बताने के बाद अब हम शुरू करेंगे हमारा बॉडी पैराग्राफ नंबर 1, राइट। सो दैट मींस so in the my body paragraph below, body paragraph नंबर 1, ठीक है। अब अगर आपको आईएलटीएस में सबसे ज्यादा बैंड स्कोर करनी है तो बेस्ट वे इज डू द मोर एंड द मोर कंपैरिजन। मैंने पिछली वीडियो में भी अपने कहा था अगर आप जितने ज्यादा कंपैरिजन करोगे आपके बैंड्स उतने ही ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। बिकॉज तो जो कंपैरिजन है उससे काफी क्लैरिटी मिल जाती है, ठीक है। और साथ में अगर आप मान लो 2011 का BP1 में लिख देते हो, 16 का सेकंड में लिख देते हो, तो वो बहुत सिंपल हो जाएगा। इट इज नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेशन वे अकॉर्डिंग टू मी। तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, मान लो रेंट एंड फूड हम मान के बॉडी पैराग्राफ 1 में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको जब आपका टास्क मिलेगा तभी आपको सोच लेनी है एट द टाइम ऑफ द एग्जाम हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट, ठीक है। चाहे आपको पाई चार्ट आए, कोई टेबल आए, कोई मैप आए, हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस, ठीक है। तो मैंने सोच लिया बॉडी पैराग्राफ 1 में रेंट एंड फूड को लिखा है, रेंट एंड फूड। अब हम स्टार्ट्स को कैसे करते हैं, वी स्टार्ट विद इन बिगिनिंग। हर जगह इन द राइटिंग आर टास्क कनेक्टर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, से यहाँ पे मैंने कनेक्टर लगाया टू बिगिन विद, ठीक है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट पहली लाइन आप ये चाहे लर्न कर लो, टू बिगिन विद, इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट। अब हम क्या बताएंगे, अब इसमें हमारी सारी फिगर आएंगी, हमारी सारी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट इन ईयर 2011, तो पहले हम ये लिख देंगे कि हमारा ईयर इन ईयर 2011 people spend a large amount of money on the food, right? People spend high proportion of money. I'm going to use the vocabulary here, high proportion of money or income on food। मैंने तुम्हें बता दिया 2011 में फूड का क्या स्टेटस था। अब मैंने कहा था हमें कंपैरिजन करना है, राइट। सो कंपैरिजन के लिए वर्ड वी कैन यूज कंपैरेटिवली
इन ईयर 2016 मैं बताऊंगा दो ना सोलह में क्या हुआ कंपैरेटिवली इन ईयर 2016 यूपी कितना 35% स्पेंड हुआ ठीक है कंपैरेटिवली इन ईयर 2016 only 35% of income on the life disability compensation aggregate only 35% of income was spent on savings ठीक है अब हम क्या बताएंगे नेक्स्ट एक और चीज जरूरी नहीं कि हम बड़ी हर बड़ी चीजें भी मेंशन करें ठीक है बट ये क्लियर होना चाहिए जो हमारा एग्जाम चेक करेंगे इनको पता लगना चाहिए कि जो हम लिख रहे हैं उसका मतलब क्या है ठीक है एक मतलब वही बात आती है हमारी रिप्रेजेंटेशन की मेन सो अब नेक्स्ट हमारा रेंट का था 30% इधर है और रेंट का 50% इधर है ठीक है नाउ आई कैन यूज द वर्ड हियर नोटेबल जितने ज्यादा अच्छे अच्छे वर्ड यूज करोगे ठीक है हर जगह जितने कनेक्टर आपकी राइट से उतना आपका रिप्रेजेंटेटिव लगेगा राइट नाउ आई कैन राइट notably only 30% was spent on rent income of citizens of notably the income is senior citizens of Europe की थी ठीक है नेक्स्ट किस पे सबसे ज्यादा पुलिस बैंक rent पे so notably income of citizens of the Europe was next spent much more on rent or we can write up the income of citizens of the Europe and 30% on rent ठीक है 30% on rent 30% of rent ठीक है ये चीज बनेगा अब हम लिख सकते हैं फॉलोड बाय अब मैंने अभी फॉलोड बाय क्यों लिखा फॉलोड बाय मैंने क्या लिखा है यहाँ पे फॉलोड बाय इन ईयर 2016 फॉलोड बाय इन ईयर 2016 लेकिन हमने 2011 का बता दिया इसके बाद हम बता रहे 2016 तो फॉलोड बाय इन ईयर 2016 और आप लिख सकते हो क्वालिटी ईयर जो आपको एप्रोप्रिएट लगता है लिखना है ठीक है the following year granted 50% of income was spent on the bank of house गाइस तो ये आपका जो अभी पैराग्राफ आ गया क्लियर है तो इसमें हमने जो ये है उसके बारे में भी बता दिया फ्री इंडक्शन यूज की ठीक है कनेक्टेड हर जगह लगाए हैं इस अकॉर्डिंग हमें जो बॉडी पैराग्राफ बनना है वो तैयार है एंड इन द सेम वे अब हमें क्या करना है बॉडी पैराग्राफ और जो कि बनाओगे आप लोग ठीक है आई एम गोइंग टू रीड द टेक्स्ट फॉर द बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 जो भी आपको बॉडी पैराग्राफ 2 से करना है सो यू कैन राइट मोर ओवर स्टार्ट में पढ़ सकते हैं मोर ओवर इट कैन बी explicitly seen that कि आपको अभी क्या दिख रहा है मोर ओवर इट कैन बी explicitly seen that अब आप इस चीज यहाँ पे देखिए 10% इधर ही गेम्स पे 10% इधर ही गेम्स पे ठीक है तो मोर ओवर इट कैन बी explicitly seen that अब आप क्या लिखोगे जो 10% है आप लिख सकते हैं सेम प्रोपोर्शन of income was spent on games was spent on games ठीक है अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं that comprised about या that accounted for कितने परसेंटेज that accounted for 10% जब आपको लाइन बता दी है the related that accounted for 10% सो ये बहुत अच्छा वे है जब दो में सेम में क्वेश्चन दिए तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो ब्रांड हो गया फूड हो गया गेम्स हो गया उसके बाद क्या हो गया स्टेशनरी बच गया तो आप बता सकते हैं स्टेशनरी जो थी 2011 में 20% स्पेंड हो रही थी फिर आप लिख सकते हो बट देयर वाज अ डिक्लाइन यू कैन यूज द वर्ड इन स्टेशनरी
जब आप स्टेशनरी का लिखोगे तो आप बता सकते हो उसमें डिक्लाइन है बाय 25% है, तो 15% से डिक्लाइन है। तो स्टेशनरी में आप लिख सकते हो देयर विल बी डिक्लाइन बाय 15%, राइट? So in this way you have to build your task one academic of the pie chart, ठीक है? Building जो मैंने बताया था table, now we are done with the pie chart. If you are liking my video, kindly like and subscribe. Thank you.